सर म्यूट हो, म्यूट। देख लेते हैं। म्यूट है आप। अभी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी ठीक है सर। अभी ठीक है, ओके। इसमें साइन नहीं दिखा रहा था कि मैं म्यूटेड हूँ, लेकिन फिर भी म्यूटेड था। फिर से बटन दबाया तो अनम्यूट हो गया, जबकि दिखा रहा था अनम्यूटेड। भाई someone removed me from the meeting. की पावर तो एक ही के पास है। नहीं, बहुत लोगों के पास है। बहुत लोगों के पास है। Okay, let us get back to the topic. So in the last class we were talking about the magnetic properties. Basically the small atoms or molecules where there are electrons revolving around स्क्रीन the... नहीं आ रही सर आपकी। मेरी फोटो तो आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही सर। नहीं सर, वीडियो नहीं आ रहा है आपका। और तेरा क्या है यार, चेक करिए। रुको, यहाँ कुछ दिखाता है, वहां कुछ। सर ऑडियो नहीं आ रही है आपकी। हाँ, म्यूटेड दिखा रहा था, किसी ने म्यूट कर दिया। अभी फोटो ऑडियो वीडियो दोनों ठीक है या नहीं? हाँ सर, अब सही यस है। सर अभी ठीक है। Okay. So in the last class we had seen that there are magnetic materials which show this magnetic behavior. Remember, electricity and magnetism are interlinked together. They are two sides of the same coin. Wherever there is electricity, there is going to be magnetism. Where there is magnetism, there is going to be electricity, one way or the other. So some of the materials where the electrons are revolving around the atom is basically creating a magnetism because of the spin of the electron about its axis and also about the nucleus. So this is going to create magnetism, but बहुत सारे मटेरियल हम देखते हैं मैग्नेटिक नहीं होता। लोहा अगर बोलते हैं, आयरन supposed to be magnetic in nature, but it is not. Why? Because all the small tiny magnets are haphazardly scattered in the whole of the substance, and in turn they cancel out each other magnetic effects. So net effect for a given piece of iron is non-magnetic. But you align all the magnetic dipoles. Dipole मतलब दो पोल, एक north एक south. When we arrange all these atoms or magnetic dipoles in one way, then all the magnetic effects of small tiny magnets are in line, get combined together so that the magnetic effect is even outside the substance. The magnetic effect can be experienced outside the magnet. So if I have a magnet, there are magnetic materials inside but not magnet. Once you align them together, we can experience the magnetism outside. तो यहाँ पे अगर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं तो वो चिपक जाता है। So the process of aligning all the tiny magnetic dipoles is called magnetization. एक लोहा है जो मैग्नेट नहीं है,
if I magnetize them one way or the other, then I am, so to say, magnetizing the piece of iron, and in turn, all the dipoles are arranged in a given manner so that the piece of iron is now magnet. Why it is called a magnet? Because we have the magnetic effect experienced outside the substance. अगर हमारे पास ये लोहा का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, और इससे बाहर में अगर मैं एक्सपीरियंस करता हूं मैग्नेटिक इफेक्ट इसके आसपास में, सराउंडिंग में, देन इट इज अ मैग्नेट. Did we talk about that there can be artificial magnet and natural magnet? So naturally occurring magnets, as we have seen, are magnetites, Fe2O3, or we can create another magnet by the process of magnetization. एक जो मैग्नेट नहीं है उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं by artificial means. What will be the process of magnetization? एक लोहे को, एक पीस ऑफ आयरन को जो मैग्नेट नहीं है उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके आएंगे. सो ऑलरेडी देयर इज मैग्नेटिज्म. मैं उस पीस ऑफ आयरन को लेके आता हूं मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके जो डाइपोल्स हैं भीतर छोटे वाले, वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और इस मैग्नेटिक लाइन से, मैग्नेटिज्म से वो भी अलाइन होने लगते हैं. तो छोटे वाले पार्टिकल्स में, छोटे वाले सब्सटेंस में, all the small magnetic dipoles get arranged in one way, it becomes a magnet. So when I magnetize a piece of material, I can have two types of result. One is called permanent magnet, other is called induced magnet. Permanent magnet is those that when converted into magnet, the magnetic property will be retained by it. वो मैग्नेट बन गया तो बन गया, फिर मैग्नेट बना ही रहता है. On the other hand, the induced magnet is basically temporary magnet. जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में है तब तक मैग्नेट तो रहेगा, गुड, बट ये हमने हटाया और ये मैग्नेट खत्म. फिर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में लाए, गुड, मैग्नेट, हमने मैग्नेटिक फील्ड हटाया, अगेन गॉन, नो मैग्नेट. So we can have two types of magnet, permanent magnet and induced magnet. How do we do it? By bringing them into a magnetizing field. दूसरे मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में लेके आएंगे तो इंटरैक्शन होगी और सारे small tiny magnets are getting aligned in one direction. तो पिछली क्लास से कुछ अगर याद हो तो बताइए, what kind of materials or iron can be converted into permanent magnet? Ferromagnetic. Ferromagnetic materials are easily magnetized. Remember that iron is ferromagnetic, but this iron itself is either permanent or induced. You're good. You remembered the term ferromagnetic material, but when we talked about ferromagnetic material, paramagnetic material, and diamagnetic material, we are talking about substances which have different properties
which magnetism. So iron is ferromagnetic, cobalt is ferromagnetic, nickel is ferromagnetic. They are all showing magnetic property. But the same iron, which is ferromagnetic material, can be permanent or can be induced or temporary. So the iron which can be either permanent or induced depends on the type of iron, hard iron and soft iron. So what is soft iron and hard iron? Let's see an example. Just 1 second. I have two pieces of wire, both iron. ये welding rod है. This also wire, this also wire. In fact, this is thin and this one is thicker. If I bend this, bend हो गया. The thinner one on the other hand, if I bend it, what is happening? तो वापस नए पोजीशन पे आ जाना। This is hard iron. This is hard iron. And this one? Iron. Soft iron. This can be converted into induced magnet, soft iron. On the other hand, then this can be converted into a permanent magnet. The difference, it is difficult to magnetize this. ये जल्दी मैग्नेट बनते नहीं, अड़ियल होते हैं, और एक बार बना दिया तो फिर खत्म भी नहीं होते, फिर से अड़ियल है. Hard iron can be converted into a magnet with difficulty. जल्दी होता नहीं, हो गया तो फिर सीधा भी नहीं होता. On the other hand, soft iron can be magnetized easy and can be demagnetized easy. On the shape, there are so many materials. Almost whole of the shape is made up of steel. Some of those are hard iron, some of those are soft iron. Now, the steel of the shape, do you think that can be magnetized? उतना बड़ा जहाज. Come again, Chevron? So you are talking about ship? Yes, I'm talking about ship. Let us say 200 meters, 250 meters. Is there a possibility of magnetizing the whole ship? Yes, Remember, for magnetizing, we require magnetic field, magnetizing field. जब तक magnetizing field नहीं होगी तो हम iron को कैसे magnetize करेंगे? So 200 meters का ship, can we magnetize it? Yes, Either sir. permanent or soft? Yes, sir. Yes. आवाज कट गई, नहीं आई क्लियर. सर मैग्नेटाइज हो सकता है सर. मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहां से लाएंगे उतना बड़ा? मैग्नेटाइजिंग के लिए तो हमें कॉइल चाहिए, उसमें करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. नॉर्मली हम जो सोलोनॉइड बनाते हैं स्प्रिंग जैसा, उसमें करंट डालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है. उतने बड़े जहाज के लिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहां से लाएंगे? Sir, Earth's magnetism. Yes, Earth is already providing that magnetizing field because Earth is a big magnet
And right now, as I stand here, as you stand there or sit there, we are in a magnetic field of the earth. सर तभी मैग्नेटिक कंपास होता है सर. हाँ जी, सर तभी मैग्नेटिक कंपास होता है सर उसमें. एग्जैक्टली मैग्नेटिक कंपास का थ्योरी ही वही है कि वो अर्थ के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से अलाइन होता है. तो नाउ वी विल गो टू द स्लाइड्स एंड उसमें कुछ कुछ चीजें जो हमने बात कर ली हैं ऑलरेडी उसी को रिपीट करेंगे. उसमें कुछ नया आएगा, कुछ पुरानी बात जो अभी हम कर चुके हैं वो हम देखेंगे. तो वी गो स्टेप बाय स्टेप. Allow me to share the screen. First of all, let me find out the file. uh, uh. All right. Can you see my screen? Sir. Okay. So just read on. जो अभी हमने बात करी उसी लाइंस पे है. जस्ट एक एक स्लाइड देखते जाइए, पढ़ते जाइए and try to make a picture in your mind what it is saying. Oh, मैंने Fe2O3 बोला था. It is Fe3O4, the magnetite. Magnets may be artificial or natural. Any kind of material can be ferromagnetic, paramagnetic, or diamagnetic. What is the difference? Ferromagnetic materials can be easily magnetized and they show very strong magnetic properties. Paramagnetic materials are affected, yes, by the magnetism. They themselves cannot be turned into a magnet, but they do react to magnetism. वो वीकर एरिया से स्ट्रॉन्गर एरिया की तरफ जाते हैं. मतलब अगर एक मैग्नेट रखी है तो मैग्नेट में दूर से मैग्नेट के नजदीक की तरफ बढ़ेंगे वो. डायमैग्नेटिक उल्टा होता है, रिपल्शन होता है. Diamagnetic also cannot be converted into magnet, but they do respond to magnetism और वो एक मैग्नेट से दूर होते हैं. So read about paramagnetic substances, paramagnetic and diamagnetic magnetic substances. आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है. हाँ अभी दिख रही है. Right? Next. सर एक बार पिछला स्लाइड वापस दिखाइए ना, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही. Okay, okay. पिछला स्लाइड.
Sir, weaker or stronger magnetic field? Tell me when you're done. ये समझा दिया सर weaker to stronger parts of magnetizing field. Okay. If I have a magnet, we know that there is a north pole and south pole. Actually, magnetism के case में we actually have red pole and blue pole. मैग्नेट के केस में हम नॉर्थ साउथ जो बोलते हैं, दैट इज द सेकेंड एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, और पोल्स को डिफाइन करने का दूसरा तरीका है. बट एक मैग्नेट में ये चीज ध्यान रखिएगा, एक मैग्नेट में हम उसको डिफाइन करते हैं कलर ऑफ द पोल से, विच इज रेड इन कलर एंड ब्लू इन कलर. एक पोल रेड होती है और एक पोल ब्लू होती है. But then why do we call it north south? We will see later on कि हम रेड पोल को नॉर्थ बोलते हैं और साउथ पोल को और ब्लू पोल को साउथ बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं. क्यों बोलते हैं आगे आएंगे. तो स्ट्रॉन्गर और वीकर कौन है दोनों में? एग्जैक्टली अभी उसी पे आ रहा हूं. So now we have a magnet. There is north and south pole. There are lines of forces which are coming from north pole going to the south pole. The strength of the magnet is strong here and weak as we go away from the magnet. So if I have a paramagnetic material here, let us say P will have a tendency to go down this way, from weaker area to the stronger area. Is it okay? If we have a paramagnetic material which is shown in orange, it is moving from weaker part of the field to the stronger part, from away coming close to the magnet. Is it clearly understood? Bhai, I am asking. Yes sir, समझ गए sir. Okay. Now suppose if we have a diamagnetic material which is placed here, let us say D, this will have a tendency to go like this, from stronger area to the weaker area. तो ग्रीन वाला रिपल्शन हो रहा है या नहीं? एंड ऑरेंज वाला अट्रैक्शन हो रहा है या नहीं? Yes. Sir. So it is understood. Is it understood what is weaker area to stronger area and stronger area to weaker area? Sir, orange one is weaker to stronger. Orange वाली is from weaker area. जैसे हम मैग्नेट से दूर होंगे तो स्ट्रेंथ कम होता है ना जी. Yes sir. और वो नजदीक मैग्नेट की तरफ बढ़ रहा है तो फील्ड वहां पे स्ट्रॉन्गर होगा कि नहीं मैग्नेट के नजदीक में? हाँ सर. तो ऑरेंज वाला वीकर एरिया टू स्ट्रॉन्गर एरिया जा रहा है या नहीं? Weak is outside, from outside to strong, is it going or not? Yes, sir. Yes, sir. And the green one, which is placed near the magnet, it is getting away from the magnet.
D, the diamagnetic material. Repulsion, is it happening or not? Yes, sir. So is your query answered? जो आपने पूछा था कि explain कीजिए, is it understood? हाँ सर. Okay. So the three types of material. Next is the magnets can be natural or artificial. जब हम artificial बनाते हैं, then we can have two kinds of results. What we may have a की आवाज नहीं आ रही। फिर आपका माइक म्यूट हो गया है। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। ये अपने आप कैसे कैसे म्यूट हो जा रहा है? अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. खुद से म्यूट हो गया, पता नहीं कैसे। ओके, सो मैग्नेट कैन बी नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब हम किसी चीज को इंड्यूस कर रहे हैं, किसी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं मैग्नेट में। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे तो या तो परमानेंट मैग्नेट बनेगा या इंड्यूस्ड मैग्नेट या टेम्पररी मैग्नेट बनेगा। When we make the permanent magnet, उसके लिए मटेरियल जो चाहिए होगी वो क्या चाहिए होगा? What kind of materials can be converted into permanent magnet? सर हार्ड आयरन। Hard iron, very good. And for induced magnet or temporary magnet? Soft iron. सर सॉफ्ट आयरन। Soft iron, very good. Remember that जहाज में दोनों तरीके के आयरन होते हैं। Some get converted into permanent magnet because of Earth's magnetic field. जब जहाज बन रही होती है तो वेल्डिंग्स वगैरह होते हैं, गर्म होता है, सारे मॉलिक्यूल जो वो ढीले रहते हैं, और जब धीरे धीरे कूल ऑफ कर रहे होते हैं तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में कूल ऑफ हो रहे होते हैं। सर और सर यस सर सर वो बार बार सर मीटिंग से कोई रिमूव कर दे रहा है सर। ये पता नहीं क्या हाँ सर, सभी की हो रही है प्रॉब्लम। रिमूव हो रहा है सर। ओके, सब लोग लॉग ऑफ करके। सर मैं 5 बार रिमूव हो चुका हूँ मीटिंग से। अरे सर मेरा भी चौथी बार है सर। सर 3 बार मैं भी हो चुका हूँ सर। तो मैं भी 4 बार हुआ हूँ सर। सर एक गुरपिंदर है, डोली का लुटेरा। अबे हमें लगा सर को किसी ने निकाल दिया। अरे नहीं यार, तब एग्जिट करो यार, दूसरा क्लास बनाओ। अरे भाई क्या हो रहा है, ये जो भी है यार रहने दो यार अब। क्लास चल रही, चलने दो भाई शांति से यार। हाँ यार अब एक बार ठीक है यार, बट बार बार ऐसा कर रहा हूँ, सब लोगों को देख लो परेशानी हो रही है यार। ये कौन है? मुश्किल से लॉगिन हो रहा है यार, बार बार लॉग आउट कर दे रहा है। शर्म कर लो यार, बच्चे नहीं हो तुम छोटे से। तो संजीव सर से पूछो क्या चल रहा है।
फिर से रिमूव कर रहे हो यार, हद है। बंदा है या क्या है तू, जो भी है। अबे भाई जो भी है रहने दो, बहुत हो गया यार, इतना इतना नहीं अच्छा लगता यार। रहने दो, मत करो यार, कोई भी है। भाई ये सब मत करो भाई, जो भी हटा रहा है बार बार। में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ कुछ हो रहा है। मैं भी फिर से अभी अपने आप लॉग ऑफ हो गया। सर बहुत बार हो रहा है सर, 10 बार लॉग आउट करवा है सर सर मेरे कम को। से कम 10 से 15 बार मेरे को हाँ सर, निकाला है कंटिन्यूस हो रहा है सर ये। कोई है ग्रुप पे सर, डोली का लुटेरा। कोई है सर जो कर ये रहा है सर सर कोई ये। ग्रुप पे कर रहा है सर, आप तो कि ऐसा ना करें सर, आप बोल दो। मालूम नहीं। पहली बार मुझे हो रहा है। सर चल बोलो रही है बोलो क्लास अभी, कोई एक्शन आप लो थोड़े वरना ज्यादा नहीं पंडित होता जी चलेगा तुम सर। तो नहीं हो। है। इसके पहले वाले क्लास में तो नहीं हो रही थी, फेस टू की क्लास ले रहा था। सर जब प्रेजेंटर संजीव सर या आप रहते हैं, मीटिंग कोई और स्टार्ट करता है तो उसके पास अथॉरिटी होती है। जब ऐसे नॉर्मल स्टार्ट करोगे तो कोई भी रिमूव कर सकता है। ओके चलो, ओके। डू नॉट तो या टच तो योर संजीव स्क्रीन। सर को बोल दीजिए, संजीव सर को बोल दीजिए वो रूम वापस बना देंगे। अब वो कहीं और फंसे हुए हैं, अभी एग्जाम चल रहा है दूसरे जगह में। सेकंड मिनट कुछ का एग्जाम नहीं समझ। कहाँ पे फंसे हुए। तो कंटिन्यू। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेट अस ट्राई टू डू इट। जितना है उतने देखो में सर, अभी बोल रहा कंडीशन। था, अभी वापस से रिमूव हो गया। कौन? सर मैं आपसे बात कर रहा अभी था, मेरे मेरे को को किसी ने रिमूव कर दिया सर। मैं वीडियो बना के ग्रुप पे डाला हूँ। अरे हाँ सर, बहुत लोग रिमूव कर रहे हैं सर। तो आपस में आप लोग शैतानी नहीं कर रहे हो ना भाई? सर आपसी में कोई कर रहा है सर, बात अरे करते सर करते निकाल। आपस में ही कोई कर रहा है सर सर। आपस में लगे हुए हैं सर ये कोई। तो आपस में कर रहे हैं तो तो इसका जो मैं बोल क्या? रहा है उसको रिमूव कर दिया जा रहा है। अब तुम लोग सर शैतानी आप करोगे तो कंटिन्यू मैं रखो। कैसे संभालूंगा? सर आप यहाँ तो कंटिन्यू रखो। नजदीक में हो भी नहीं कि कान पकड़ सको तुम्हारा। फिर से रिमूव। यस सर कंटिन्यू। ऑल राइट, ठीक है, मैं ये करता हूँ अभी। एडमिन से बात करता हूँ, उनका भी नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं क्या। वेट अ अरे सेकंड। सर नेट की प्रॉब्लम नहीं है सर, बात करते करते ही मेरे को ये निकाल दे रहे हैं सर ग्रुप से। सर ये कोई ओके भगा देख, रहा है बार। बात तो सुन, किक आउट ही करी जा रहा है, बात तो सुनने तो पूरी। रुको देखते हैं, वेट वेट वेट। भाई क्या हाथ पे लगा तुम लोग के भाई, ये सब मत करो भाई। अबे कम से कम 25 बार किसी ने रिमूव किया यार, जब से सर बैठा हूँ तब से। एक
भाई अंडी बंडी संडी जिसने किया फिर हाँ। Yes, okay. So we are going to take care of that. कोई एक दूसरे को निकालिए मत. वैसे अभी सिक्योरिटी फीचर्स को लागू किया जा रहा है. All right. So we were talking about the soft iron and hard iron. Some of the materials on the ship gets turned into permanent magnet. Some of them get turned into soft. Soft iron वो है जो जहाज इधर चलेगी तो मैग्नेट हो जाएगा, इधर चलेगी तो खत्म, उधर चलेगा तो फिर से मैग्नेट, फिर दूसरा, अलग अलग हेडिंग पे अलग अलग सर मैं इंडक्शन होता है. यस, कोई ग्रुप में बदमाशी कर रहा सर, फिर लॉग आउट हो गया था, फिर लॉग इन हुआ. ओए है, शैतानी कर रहे हो तुम लोग. मैं तुम्हारे कान भी खींचूं तो कैसे खींचूं? चलो सर मैं क्लास लीव कर रहा हूँ सर, कम से कम कोई 30 बार लॉग आउट कर चुका है सर. कितनी बार लॉग इन करूंगा सर, जब बिना कुछ बोलते बोलते लॉग आउट कर दे रहे हैं सर. फिर लॉग आउट कर दिया, फिर लॉग इन हुआ सर. 2 बार हो गया सर, सेकंड टाइम. सर आप अपने आप को प्रेजेंटर नहीं बना सकते सर? नहीं, प्रेजेंटर बना लो सर, हो जाएगा सर. प्रेजेंटर तो मैं बना हुआ हूँ. सर एक बार रूम सर ये दोबारा देखो सर, फिर क्रिएट से कर लो बात सर. करते करते सर लॉग आउट करवा दिया. रूम दोबारा से क्रिएट कर लो सर. ओके, रूम दोबारा से तो क्रिएट होगी. अभी कुंवर सर हैं जो एडमिन है, वो सिक्योरिटी फीचर लागू कर रहे हैं, तो उसके बाद ये आप लोगों के हाथ से ये फीचर निकल जाएगी, that you can change, you can remove somebody or not remove somebody and all that. अरे फिर से सर किसी ने किक कर दिया. अभी बोल रहे हैं फिर किक कर दिया बोलते बोलते. हाँ सर, बोलते Okay, बोलते निकाल दे रहा है कोई बार बार. wait a second. सिक्योरिटी करवा It is दिए सर. 12:15. We are terminating the class at 12:15, 12:17 now. सर ये दूसरी बार We'll हो meet गया. after 15 minutes. We'll meet after 15 minutes and continue with the class. ये क्लास छोटी हुई है, अगली क्लास लंबी होगी. ये 45 मिनट्स की हुई है, तो अगली क्लास 1 hour 15 मिनट्स की होगी. We are closing the class सर right now. क्लास Lot skip of कर दे cases रहे हैं happen. सर, लॉग ऑफ कर दे रहे हैं, दूसरी क्लास बनवा दो सर. तो सब लोग लॉग ऑफ कर जाओ. We are terminating the class right now. Next class we are going to start at 12:20 हो गया. 20 plus 15 35 पे 12:30. 35.
भाई ये कौन कर रहा है यार?
हेलो, वेलकम बैक शैतान बच्चों। यस सर। मैंने कहा शैतान बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप शैतान का उपाधि दे दिया सर। कर रहे थे, फिर मुझको भी रिमूव कर दिया। बेशरम लोग हैं तरी से। ओके, शैतानी ठीक है लेकिन ज्यादा नहीं। ऑल राइट, सो विल गो डायरेक्टली टू द स्लाइड्स एंड विल कंटिन्यू ऑन। वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। आपकी कुछ और दूसरे क्लासेस की भी रिक्वायरमेंट है, so we'll make the best of the time that we have available. Directly going to the slides और वहां से आगे बात करेंगे। Let me open the file. अच्छा, let me share the screen. फाइल तो खुली होगी कहीं। All right, so we have seen permanent magnet. Hard iron can be converted into permanent magnet. Hard iron is something which is difficult to magnetize, but once magnetized, they cannot be demagnetized easily. Induced magnet, on the other hand, easily magnetized and very easily demagnetized. This is the magnetization process. So as per theory, there are small tiny magnets which are scattered, not arranged, and so they are cancelling out each other's magnetic field. So this part is not a magnet. But if we have a magnetic field created by another magnet or current, these tiny little small magnets can be arranged in a given structure. So as you can see, they are all getting arranged like this. So all of them are sequentially arranged. And so now this one, the bottom one, is a magnet now. It is magnetized. So this is the process of magnetization. अगर एक normal piece of iron को लेते हैं आप और उसके ऊपर में अगर दूसरे मैग्नेट से एक ही डायरेक्शन में बार बार अगर रगड़ते हैं उसको, तो थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके जो छोटे मैग्नेट्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं एक सीक्वेंस में। So what is a magnet? If you are able to experience the magnetic effect outside the material, then it is called a magnet. So metals in general, like the nickel, cobalt, iron, etc., can be magnetized, can be turned into a magnet. So here comes the introduction of color, the red color and the blue color. Normally, a magnet is said to be a dipole. Why? सर मीटिंग रिकॉर्ड नहीं हो रहा है सर। रिकॉर्ड नहीं हो रहा? Okay, let's see. Let us see. नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है। यस सर, थैंक यू सर। It is getting recorded. यस सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ। So
A magnet is generally termed as a dipole or magnetic dipole. Why dipole? Because it has got it has got two poles. One pole is red, other pole is blue. Since there are two poles, dipole. In general, all magnets will be dipole. The magnetic properties that you are seeing in a magnet, it makes a magnetic material get attracted to the magnet. अगर पिन रखते हैं तो वो चिपक जाती है उससे. अगर पिन ज्यादा दूर में है तो नहीं खींचेगा. क्यों? क्योंकि field strength or magnetic strength near the magnet is strong. But as we go away, it becomes weak and weak and weak. So एक चीज जो आपने नोटिस की होगी शायद कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे लाइंस बनाए नजदीक में, और जैसे हम दूर जा रहे हैं ये लाइंस जो है वो कम होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से. तो ये तरीका है मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को दिखाने का या मैग्नेटिज्म को दिखाने का कि इस मैग्नेट के आसपास में एक सराउंडिंग में एरिया है जिसमें ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सटेंड हो रही है. एक पेपर क्लिप को रखें मैग्नेट के नजदीक, उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा. मैग्नेट से दूर रखेंगे कम फोर्स लगेगा. बहुत ज्यादा दूर रखेंगे तो नहीं लगेगा. So magnetism of a magnet is represented by magnetic lines of forces. ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, these are magnetic lines of forces. लाइन होती नहीं, ये थ्योरी में हम दिखाने के लिए, पेपर में दिखाने के लिए इनको रिप्रेजेंट करते हैं इन लाइन से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में होता है. नो, इट इज नॉट करेक्ट. बट उसके इफेक्ट को वी आर ट्राइंग टू शो बाय मीन्स ऑफ लाइंस. दीज लाइंस and these are called magnetic lines of force. The magnetic lines of force never cross each other. If you have a magnet, red pole and blue pole, then these lines of forces are always parallel to each other. Not necessarily parallel, but they never intersect each other. एक दूसरे को कट करते हो ऐसा नहीं होता. ग्रीन वाला केस नहीं होता. They make a distorted. सर ये फिर से रिमूव वाला फीचर आ गया सर, रिमूव कर रहे हैं सब. यार ऐसे करोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं बताओ तो यहाँ से बैठ के मैं क्या करूं. इट इज सेल्फ डिसिप्लिन. इट इज सेल्फ डिसिप्लिन. अगर आपको क्लास में भाई whoever is doing it, if you don't want to attend the class, get lost from here. Don't attend the class, but don't create nuisance. तो पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ने दे. Anyone getting removed, I am terminating the class. Fun is okay. रहने दो यार, मत करो अभी. सीरियसली पढ़ लो यार, 1 घंटा क्या यार नौटंकी मचा रहे हो. Fun is okay. It is okay if the children are making fun of a situation और कुछ शैतानी करते हैं. It is all right. बच्चे हैं, करेंगे बदमाशी, बट एक लिमिट के बाद नहीं.
तुम लोग शैतानी करते हो, मैं तो हंसता रहता हूं। शैतानी तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा, लेकिन एक लिमिट होती है। पिछली क्लास में हमने देखा ऊपर नीचे हुआ सब ठीक है, अब तो सीरियस हो जाओ ना। All right, so what we are saying, the field lines or lines of forces may be distorted because of external influences. वो distort हो सकते हैं, but again they will never intersect with each other. एक दूसरे को काटते नहीं। So field strength of a magnet is represented by these lines of forces. सर मतलब Incidentally, लली रहती है ना सर? come again? सर ये जो लाइंस होती हैं सर, तो ये एक तरीके से पैरेलल ही रहेंगी ना सर? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मान लो अगर हमने यहाँ पे एक मैग्नेट रखा नॉर्थ साउथ, इसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे होंगी। हाँ सर। अब मैं एक दूसरा मैग्नेट लाता हूं यहाँ पे जिसमें नॉर्थ साउथ है, तो इसका अपना लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा। हाँ सर। अब आपको मालूम है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यस सर। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये लाइंस जो है एक दूसरे को धक्का मारते हैं। तो अगर रेड कलर में देखें तो इसका यूं होने लगेगा, और इसका वाला ग्रीन वाले का जो है वो भी कुछ ऐसा होने लगेगा। हाँ हाँ सर। दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, और पुश करने में थोड़ा सा पैरेलल नहीं रह जाते, डिस्टॉर्शन होती है उनमें, तो एकदम पैरेलल नहीं होगा। और वैसे भी पैरेलल नहीं होता क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर like this, like this, and like this. Are you seeing these lines to be parallel? यस सर। नहीं है ना, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। पैरेलल सिर्फ इस पार्ट में पैरेलल है सभी, सेंटर में पैरेलल है, लेकिन बाकी सब जगह तो एक दूसरे पे इंक्लाइन है थोड़ा। हाँ सर। जैसे यहाँ पे ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इंक्लिनेशन हो गई ना दोनों के बीच में। यस सर। So they are not necessarily parallel, but highlight point is that they never intersect with each other. वो दोनों को क्रॉस नहीं करते एक दूसरे। One more fact which should be understood very clearly is that magnetic lines of forces are like this. Yes, but they do have a direction. They come out from the north and enter into south. Outside, from north pole to south pole, the lines of forces are coming out from the north pole, getting into the south pole of the magnet, which is externally. But भीतर में क्या हो रहा है? तो वो भीतर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। These are continuous lines. So these lines of forces emanate from north pole or something called the red pole and enter into the blue pole outside. But inside is from blue pole to red pole. So basically, when there is a magnet, these lines of forces are continuous rings basically. Again, not crossing inside. I cannot draw it so very finely. So next,
there is interaction between magnets. Unlike poles attract, like poles repel. अगर ऑपोजिट पोल्स होंगे तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं एक दूसरे को कंबाइन करती हैं, एक दूसरे में मिलती हैं और दोनों एक दूसरे को खींचता है। जबकि ऑपोजिट पोल्स सॉरी सेम पोल्स होंगे तो एक दूसरे को पुश करते हैं। So magnets can be represented by these two colors and the two poles. Definition: what is magnetic dipole? I think I have repeated it a couple of times, so just read it on. A magnet having two poles separated by a finite distance, given distance infinite nahi ho, then it is called a dipole or magnetic dipole. Why a paper clip got attracted to a magnet? Because that paper clip is also a magnetic material और उसके भीतर जो टाइनी छोटे वाले मैग्नेट्स थे उनको वो टर्न करता है, घुमाता है, ओरिएंट करता है. So these magnetic lines of forces or magnetism basically produces a turning force, what we call magnetic dipole moment. It is a vector meaning something that has a direction and also has a magnitude. If I say velocity, so 10 kilometers ka speed or velocity, but in which direction? Due south, north, east, west. So direction bhi hai और magnitude bhi. So dipole moment is basically a force, turning force. Force लग रही है तो किस direction में लग रही है? That means it has to be a vector. So it is a vector from south to north pole along the axis of a dipole, जिसका magnitude हम देते हैं m into 2l. M is the magnetic pole strength and L is the distance between two poles. So if we have a magnet, there is an axis in the center. If this is south, this is north pole, then the vector is in this direction from south pole to north pole. And how much is m into 2l? So the pole strength maximum will be at this point here, at this point here. So this is the distance L. So magnetic moment or magnetic dipole moment is equal to m into 2l. इस पर्टिकुलर फैक्ट्स का, इन सब चीजों का इमीडिएट यूज नहीं होगा आपके एग्जाम में, बट ये बेसिक्स जो हैं ये समझने से हमारी आगे की स्टडी थोड़ी आसान होती है. The magnetic field, an area around the magnet where a magnetic material
experiences a force is the magnetic field. So if there is a magnet here, outside this we are experiencing some force, or some magnetic material is experiencing a force, then this area is said to be magnetic field. बाहर का जो area है, these areas are said to be having a magnetic field, or the bar magnet has a magnetic field extending up to certain limits. अगर हमने कोई पेपर क्लिप यहाँ पे रखा, इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा, मतलब उतने दूर तक इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर हमने पेपर क्लिप यहाँ पे रखा है और ये खींच रहा है, that means yes, we have a magnetic field here. Study the diagram. The magnetic field is represented by these lines. These lines are coming out from which pole? North pole. Getting into South pole. But that is outside. Inside it is all continuous line, continuing. ये break नहीं होता, ये lines टुकड़े में नहीं होता. It's a complete closed loop. So you can understand that if there is a bar magnet, जितने lines of forces है सब इतने में से पास हो रहा होगा भीतर से, from south pole to north pole. यहाँ पे सारे जा रहे होंगे इस डायरेक्शन में. तो इसकी कंसंट्रेशन मैग्नेट के भीतर बहुत ज्यादा होती है और बाहर में वो कम होता है. These are all continuous loops basically. Next. Already discussed this. The lines of forces emanating from north, entering into south. The point where it is coming out from is the red pole. Where it is entering is the south pole, blue pole. Something about the strength of the magnetism or the field strength. On the screen you can see a bar magnet horizontally placed, red pole on the left, blue pole on the right. So along the axis of the bar magnet is called the end on position. ये वाली area जो है in line with the axis is called end on position, and perpendicular to it is called broadside position. Incidentally, if I keep a magnet or a nail here or piece of iron here, here also attraction is there, here also attraction. कहीं पे भी रखेंगे तो वो चिपक जाती है. Yes, sir. But the force experienced by the magnetic material, मान लो एक कील रखते हैं, nail,
the force experienced by a nail, अगर यहाँ पे x force लग रहा है, if there is x force on the broadside position, तो यहाँ पे 2x लगेगा. मतलब field strength is twice on the end on position than on the broadside position. broadside में x है तो वहां 2x लगेगा. और उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर end on position पे x है तो x by 2 लगेगा broadside position में. This can be mathematically proven, but we are not going into mathematics of this. But this fact must be remembered कि end on position में field strength is twice to that of the broadside position of the magnet. Study this diagram. Clear? Idea home? Next. What is magnetic flux? थोड़ा confusion होएगा, but this confusion is only temporary. अभी हम समझ लेंगे तो clear हो जाए. Basically what we are talking about is कि अगर यहाँ पे magnet है तो lines of forces हैं. हम individually इनको lines of forces बोल रहे हैं, but in totality we can say there is magnetic flux in this area. अगर यहाँ पे lines of forces हैं तो इनको कंबाइंड तरीके से हम एक वर्ड में बोल सकते हैं, नॉट लाइंस ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, बट वी कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स. So magnetic flux and magnetic lines of forces are not different. It is just way of representing a fact in two different manner. So basically the lines itself are called the flux. The flux has got a unit. It is a quantifiable the quantity. So the flux is measured in the unit of Weber. ज्यादा दिमाग नहीं खराब करेंगे इसके बारे में. So magnetic lines of forces itself are basically magnetic flux. One more thing to understand here is that magnetic lines of forces are very close here, or as we keep on going it becomes more and more distant. तो अगर मैं एक छोटा सा एरिया यहाँ पे लूं और उतना ही छोटा सा एरिया यहाँ पे लूं, तो number of lines passing in this area and number of lines passing in this area, left and right, is it same or different? सर डिफरेंट ही हुई सर. एकदम डिफरेंट है. तो इस डिफरेंस को कैसे बताया जाए?
कि यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम, कैसे बताएं? डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी. Remember, magnetic lines of forces are flux. That means Yes. there is more flux at this place. The left one, there are more lines of forces per unit area. Then in the right case, यहाँ पे कम है. Right case में magnetic lines of forces are less. तो दोनों के difference को बताने के लिए we have another term called magnetic flux density. तो अगर मैं बोलूं A and B, A has got more flux density, B has got less flux density. Definition: the magnetic lines of forces per unit area. एक given area में how many lines of forces are there? That is basically the density of the flux. Flux density represented by capital letter B. Area has to have a unit. SI system में unit area is meter square. So how many Weber, how much of flux lines Webers are passing through unit area, that is per meter square, is called the flux density. All right, अभी तक ठीक है? हाँ I सर, can इसमें ये understand कि ये सेकंड वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं. अच्छा, सेकंड वाला. हाँ सर. हाँ पढ़िए, मैं वैसे एक्सप्लेन करूंगा बट पढ़ लीजिए. पढ़ा सर, नहीं आया समझ में, एक बार समझा दीजिए. Very good, no issues. So next one we are talking about field strength. Very simple. आपने एक छोटा मैग्नेट रखा है यहाँ पे और यहाँ पे एक छोटी सी पेपर क्लिप रखी. There can be attraction. ये पेपर क्लिप जो है वो मैग्नेट की तरफ जाएगा. उसके अगेंस्ट में अगर मैं एक दूसरा मैग्नेट लेता हूं और उसी पेपर क्लिप को मैं यहां पे रखता हूं, इसमें भी अट्रैक्शन होएगा. आप बताइए अपने कॉमन सेंस से कि दोनों के ऊपर फोर्स जो लग रहा है अट्रैक्शन का, वो सेम होगा या अलग अलग? Paper clip in the green case or in the orange case, the force experienced by the pin will be same or different because there are two different kind of magnets. अब कोई जवाब देगा मुझको? क्या बात है, नो जवाब. रिपीट करिएगा प्लीज. मेरा क्वेश्चन है कि एक छोटा मैग्नेट है जो कि ऑरेंज में दिखाया हुआ है,
और हमने एक पेपर क्लिप रखा थोड़ी दूर पे x डिस्टेंस पे। दूसरे केस में, ग्रीन केस में एक बड़ा मैग्नेट है, उसमें भी हमने एक पेपर क्लिप को उतने ही डिस्टेंस पे रखा, दोनों का डिस्टेंस x है। तो पेपर क्लिप पे जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है वो दोनों केस में बराबर होगा या अलग अलग होगा? सर अलग अलग रहेगा। सर अलग होगा। वेरी गुड। क्यों अलग होगा? क्योंकि फील्ड दोनों का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फ्लक्स सर मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होता है। फील्ड अलग स्ट्रेंथ, अलग रहेगा दोनों। exactly, and that we represent by the term field strength. We can say that field strength at green case is more than the orange case. That means अब हम इस पेपर क्लिप को हटा देते हैं और यहां पे एक यूनिट पोल रख देते हैं, लेट अस से नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है केस ए में वो कम है, और जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है यूनिट पोल से केस बी में वो ज्यादा है। व्हाई? बिकॉज द फील्ड स्ट्रेंथ एट बी इज मोर देन द फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए। हर मैग्नेट का अपना एक फील्ड स्ट्रेंथ होगा एट ए गिवन डिस्टेंस। छोटा मैग्नेट तो छोटा फील्ड स्ट्रेंथ एट ए गिवन डिस्टेंस, बड़ा मैग्नेट, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट तो फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो। सिंपल एज दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक छोटा 5 वाट का बल्ब जल रहा है और एक 500 वाट का बल्ब जल रहा है, तो कितनी लाइट होगी एट ए गिवन डिस्टेंस? 5 वाट का इतना लाइट होगा तो 500 वाट का ज्यादा लाइट होगा। इन द सेम वेरी मैनर, a small magnet will have a smaller field strength at a given distance and bigger field strength by a bigger magnet. That is what it is saying. So the force experienced by it or the field strength is given by m into h. m is the magnetic pole strength. चलो इसको छोड़ दो, m into h में मत जाओ। Simply strength of the magnetic field is basically कि जैसे हम नजदीक जाते हैं मैग्नेट के तो फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जैसे हम दूर जाते हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है। दूर जाएंगे तो फोर्स कम एक्सपीरियंस करेंगे, मैग्नेट के नजदीक जाएंगे तो फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। We already have talked about hard iron and soft iron, so please read on. Same process of magnetization. Hard iron, difficult to magnetize, but once magnetized, difficult to demagnetize. Process remains same. तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए from hard iron we need very strong magnetic field for longer period of time. This we have already done. Repeat है basically.
रेड पोल से लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकलती हैं, साउथ पोल में घुसती हैं। सॉफ्ट आयरन, next, the process of magnetization. When a material is magnetized, we have already seen that in a magnet there is north and south pole, or what we call the red pole and the blue pole. Lines of forces are coming out from the north pole and going into south pole. So let us say that these lines of forces are like this. अगर एक सॉफ्ट आयरन है जिसको मैं along the lines of forces रखता हूं, तो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन होगा। रिमेंबर, ये सारी चीजें हमें अप्लाई करनी होंगी मैग्नेटिक कंपास के केस में। ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे जब वहां हम बात कर रहे होंगे मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में, तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वहां पे। So what we are talking about here, that when a piece of material is placed in line with the magnetic lines of forces, there is maximum magnetization. If we keep a magnetic material perpendicular to the lines of forces, then minimum or zero magnetization. So at 90 degree to the lines of forces, 0. At 0 degree with respect to lines of forces, maximum. 0 degree, maximum. 90 degree, 0. Is it getting some, is it giving you some idea about some trigonometric function? Cos theta. Cos theta, yes, very good. So in between, if we have another orientation which is at an angle with respect to lines of forces, there will be intermediate value of magnetization. ना तो पूरा maximum होगा, ना zero होगा, बीच में कुछ होगा, which is what is explained here. Of course, the direction of the magnetic field is reversed here. ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। उसका भी एक रीजन है जो हम आगे बात करेंगे। So if you have a soft iron, in this case it will be magnetized to the maximum, 0 degree to the lines of forces.
When at 90 degree perpendicular to the lines of forces, no magnetization. At an angle when it is inclined, there is going to be intermediate magnetization, not full, not zero. Remember again, ये सारी चीजें जब आप कंपास में आएंगे पढ़ने के लिए तो यूज होंगी, इन सब कॉन्सेप्ट्स का यूज आएगा. तो इस चीज को बढ़िया से दिमाग में बिठा लीजिए कि when it is in line of the lines of forces, when the soft iron or hard iron is in same line to the lines of forces, magnetic lines of forces, maximum induction, perpendicular, zero. Next, intensity of magnetization. Again, it is talking about the same thing. जितना फील्ड स्ट्रेंथ होगा उतना मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी. जितना डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगी. What do we mean by saying that? If there is a magnet and there are lines of forces, if I keep a magnet or a piece of material, soft iron here at A, and if I keep a material here at point B, the intensity of magnetization at A and at B, will it be same or different? सर डिफरेंट रहेगा, बी का ज्यादा ए का कम. Very good. That's exactly what I wanted to say, and that's exactly what it means. Intensity is more. Intensity of magnetization is more because at this place there are more lines of forces, flux density is more, and at B there are less lines of forces. So if you keep a soft iron in a high strength field area, magnetization will be more. If you keep it in less magnetizing or magnetic field area, magnetization intensity will be less. It is simply saying that. Read the slide from top to bottom. I'm waiting for you to read and understand. जो अभी हमने डायग्राम में देखा था, that is summarized here in the last paragraph. Field strength ज्यादा होगी, intensity of magnetization ज्यादा होगा. ऐसा क्यों होगा? जैसे अभी हमने बात किया था कि यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा हैं और यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्सेस कम है. अगर हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा, सॉफ्ट आयरन, एट ए एंड बी,
तो रिमेंबर कि मैग्नेटिक मटेरियल और सॉफ्ट आयरन के भीतर में वही छोटे टाइनी मैग्नेट्स है डाइपोल जो कि डिरेंज्ड हैं. Because of these lines of forces they all get oriented, तो उनको सबको टर्न करने में एक मोमेंट क्रिएट हो रही है. तो वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो यहाँ पे ए पे कम हो रहा है, इसलिए कम मैग्नेटाइजेशन होता है, और बी पे ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस है, ज्यादा मोमेंट क्रिएट होता है, सबको ट्विस्ट करता है बड़े आराम से, ज्यादा फोर्स लगती है, तो मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होती है. Next, we can skip permeability and susceptibility. छोड़ देते हैं इसको. So now we have dealt with normal magnet and its behavior and the terms and definitions that are used in terms of magnetization. We talked about soft iron, we talked about hard iron, we talked about types of material, ferro, para and diamagnetic materials. We talked about artificial and natural magnets. We talked about permanent magnet and induced magnet. We saw what is magnetization, how materials get converted into a magnet by process of magnetization. We have seen when magnetization is maximum and minimum. So generally, we have understood the properties of magnetic properties of substances. Is it right or not? कुछ पकड़ में Right, आया? sir. Okay. Yes, sir. Now we are talking about the magnetic field of the earth. Earth is a big magnet. How come? मैग्नेटिक मटेरियल में हमने बात किया कि आयरन होती है, कोबाल्ट, निकेल, मेटल्स लाइक दैट आर magnetic materials, but earth is made up of water, earth and sand, soil, trees, humans, everything included. तो ये कैसे मैग्नेट हो गया? Basically the earth is outside all that we were talking about, but inside there is a molten core which is in molten state, पिघला हुआ है. Most part of it is molten iron. Liquid state में लोहा है जो एक्सट्रीम हीट के चलते यहाँ पे पिघला हुआ है. The earth is rotating like this because the liquid inside is molten state, is in molten state. So इन दोनों के बीच में एक relative motion हो जाता है. That means पिघला हुआ iron is moving kind of little slowly than the outside earth. Also there are other materials which cause lot of electricity inside this core. This electricity is in turn producing magnetic effect. Currents produce magnetism. Since there are so much of current happening here, this current in turn produces a magnetic field around the earth. So the earth is considered a big magnet. But to talk about the
magnetic properties of the earth in terms of what we have already understood. What we say that earth has got a small magnet inside or magnetic dipole inside. अर्थ के भीतर में सेंटर में एक मैग्नेट है इमेजिनरी, करंट्स वगैरह के चलते जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि अर्थ के भीतर में एक मैग्नेटिक डाइपोल है. Since there is a magnetic dipole, there has to be blue end and there has to be a red end. So in this case, it is assumed that the blue pole, which normally we consider the south pole, remember, is towards the geographic north, and the red pole is at the geographic south end. That means, okay, not means, you tell me, magnetic lines of forces, where will it come out from and where will it get into? So from north to south. Remember what we said earlier. The lines of forces emanate from North pole, sir. red pole. So north pole here is supposed to be this one. Is that correct or not? Red pole is north. Yes, sir. That means it will be coming out and going into like this in this direction or not? Yes, sir. If I have a magnet suspended like this, the red end of the magnet will be attracted to the blue end or not? Yes, sir. That means this red end will be pointing to Earth's north. Is that correct or not? Yes, sir. That is why this red pole is called North Pole. The magnet is red pole and blue pole. But this red pole of the magnet is always pointing to the Earth's geographic north, because inside the Earth, the magnetic dipole is inverted. North की तरफ South Pole है, Blue Pole, and Earth के South Pole की तरफ Red Pole है. So what we are saying, that in this case, Earth का red pole is here to the geographic south, and the blue pole is towards the north. If I have a magnetic needle, the red end of the magnetic needle will be pointing in this direction, correct? Opposite poles attract. बात आ रही है समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? पूरा नहीं आया, एक बार वापस से repeat कर दीजिए। क्या हुआ? नहीं समझ में आया? ठीक से बोलो, साफ सुथरा. सर पूरे अच्छे से समझ में नहीं आया, एक बार और बता दीजिए प्लीज. Very good, no problem.
wait a second. Can you see the board? Yes, sir. Yes, sir. एक second. I need to have pen. Okay. So this is the Earth. Earth is made up of all that. लेकिन यहाँ पे जो मोल्टन स्टेट में लिक्विड है आयरन वगैरह, उसके चलते हम इसको कंसीडर करते हैं कि अर्थ के भीतर में एक मैग्नेटिक डाइपोल है. By convention, it is understood that the red pole of the Earth's dipole is at the south end. This is south or geographic south. This is geographic north. But geographic north की तरफ blue pole होता है और geographic south की तरफ red pole होता है. इस केस में the magnetic lines of forces always emanate from red pole and they get into south pole. सही है या नहीं? रेड पोल से निकल के ये ब्लू पोल में जा रहा है. इज इट करेक्ट और नॉट? यस सर. जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि एक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल में रेड एंड से लाइंस निकलती है, रेड एंड से लाइन निकलती है और ब्लू पोल में लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर आउटसाइड फ्रॉम सो टू से नॉर्थ. लेकिन नॉर्थ इज उल्टा हेयर. Why? Because these lines of forces are in this direction because of this situation. अब मेरे पास मान लीजिए कि एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक मटेरियल है या मैग्नेट है, मैग्नेट है. इफ आई सस्पेंड इट यहां पे, तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस से अलाइन होगा या नहीं? अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक नीडल है, उसको मैंने सस्पेंड किया, तो मैग्नेटिक नीडल विल बी aligned with this so that the red end is towards the blue end of the earth. Is that correct or not? Unlike poles attract each other. So in this case, this red pole will be pointing towards the north. Geographic north की तरफ होगा या नहीं? हाँ सर. और इसी के लिए रेड पोल को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, क्योंकि एक मैग्नेटिक नीडल का रेड पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड दैट इज व्हाई वी कॉल द रेड एंड ऑफ द मैग्नेट टू बी द नॉर्थ पोल. व्हाई? बिकॉज इनसाइड बाय कन्वेंशन वी टेक इट उल्टा. जो यहां पे है मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ द अर्थ इज इन्वर्टेड. जो रेड पोल है वो नीचे, ब्लू पोल है वो ऊपर. इसलिए जो बाहर में हमने मैग्नेटिक नीडल रखा, उसका रेड एंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ब्लू एंड which is the geographic north, and that is why the red is called the north pole of the magnet. Is the idea home?
समझ में आई बात Yes, या sir. नहीं? Again, since we have the earth here and we have a magnetic dipole inside, so this axis and this axis, is this not end on position? This one, is it not broadside position? Yes, sir. That means if the field strength is X here, will it not be X by 2? X by 2. Or if it is X here, then at the end on position, 2x. 2X. Also, one thing to note here is that the magnetic lines of forces are coming out from the red pole. Blue pen kahan gaya? Ek second, hold on. I had a blue pen also. Okay, let us consider the green to be the blue pole. These lines of forces emanate like this from here. Then they go like this and get into like this. ये लाल वाली लाइन का सिचुएशन क्लियर है आपको या नहीं? कि यहां से ये निकलेगा नॉर्थ पोल से और रेड पोल से, और ये कंटिन्यूअस लाइंस विल गो इनटू द ब्लू पोल. Is it correct? Yes, sir. So what are you seeing about the lines of forces? At what angle they are coming here at the poles? At what angles they are coming at the poles? And at what angle they are at the equator? Is it perpendicular in? Is Perpendicular it at pole. perpendicular out? हॉरिजॉन्टल से सीधा निकल रहा है परपेंडिकुलर. जब यहाँ पे Yes, sir. तुझे पहुंच रहा है तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? Parallel, sir. Parallel. Very good. On equator, lines of forces are parallel to the ground, and on the poles the lines of forces are Perpendicular. great point, and this point should be considered very closely. Think of it again. थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दीजिए इसके बारे में. वैसे टाइम क्लास का भी हो गया है, but take a look at this and try to soak it in. Earth का magnetic field or magnetic dipole is inverted. Red end towards the south pole, blue end towards the north pole, so that lines of forces of the earth are considered to be going in this direction, heading in northern direction. यहां से इस तरफ को जा रहा है. These lines of forces are perpendicular at poles and horizontal at the equator with respect to the ground. Also, the field strength at the poles is twice to that of the broadside position. Take a minute to think about it. Are we good now? Up to this? Earth's magnetic field.
सर एक क्वेश्चन था बोलिए। कि अर्थ है तो स्फेरिकल, सर्कुलर नहीं है, तो ट्वाइस स्फेरिकल भी नहीं है, सर्कुलर भी नहीं नहीं है। सर, वो पॉइंट नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपन ये जो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, ये तो सर्कल के लिए कर रहे हैं कि इधर से डबल होगा वहां पे, बट अर्थ के 360 डिग्री में जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा होगा वो सारा के सारा पोल पे कन्वर्ट हो रहा है, तो हाउ कैन वी से कि ट्वाइस ही है, वहां से ज्यादा भी होगा ना उससे। If we take a look here, ये अर्थ है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल ये है, मैग्नेट का एक्सिस ये है। तो एक डाइपोल में अगर हमने यहाँ पे छोड़ दिया, एक मैग्नेट है, इसका ये एंड ऑन पोजीशन है और यहाँ पे ब्रॉड साइड पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या x और 2x का रिलेशनशिप होगा या नहीं? हाँ सर, थियोरेटिकली तो यही पढ़ा है अभी तक। थ्योरेटिकली यही पढ़ा है और वही थ्योरी यहाँ पे अगर इसको हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए अर्थ के स्फीयर को, तो हम तो सिर्फ डाइपोल की बात कर रहे हैं जो अर्थ के भीतर है। तो ये ब्रॉड साइड पोजीशन और ये एंड ऑन पोजीशन, तो यहाँ x और 2x का रिलेशनशिप होगा या नहीं? हाँ सर। अब हमने अर्थ बना दिया तो बात तो वही रह गई, हाँ सर। ठीक है ना? यस सर। तो दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बेसिकली, इसका बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशन आपको नहीं करना है, बट मैग्नेटिज्म के बारे में आपको ये जानना चाहिए कि हाँ, पोल के एंड्स पे ज्यादा होती है, इनफैक्ट डबल होती है साइड ऑफ द मैग्नेट के स्ट्रेंथ से। और इसको अगर हम H बोले फील्ड स्ट्रेंथ, तो जितना फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ होगा यहाँ पे उसका दुगना होगा। फील्ड स्ट्रेंथ डिनोटेड बाय H। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? नहीं सर। इतना पूछ लिया वही बहुत। गुड। Having doubt is a good sign. Having doubt shows that you're thinking. Not able to understand is totally all right. If you are asking question, that's a very good sign. 4 बार पूछते हैं, no issue, very good sign. Because 4 बार के बाद भी still trying to understand, that's why you are asking 4 times or 5 times or 10 times. Good sign, very good sign. दिव्या कुमार सक्सेना। यस सर। क्या हाल चाल, सब ठीक है? यस सर, बढ़िया, आप बताइए। मैं तो हूँ, मैं मैग्नेटिक कंपास की पूछ रहा हूँ, आपका हालचाल खाने के लिए पीने के लिए नहीं पूछ रहा। ठीक ठाक है? यस सर, समझ में आ रहा है। अभी तक क्लियर है? यस सर। ओके, वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें, कोई भी नई चीज हम सीखते हैं तो एक बार में नहीं होती। When we go into the class, when we learn something, एक बार में नहीं होता। We have to revisit again and again, again and again. कम से कम 3-4 बार जब पढ़ते हैं तो हमारी पकड़ बनती है। It's not the case with you, it is with me also. मैग्नेटिक कंपास मैंने अभी 2-3 बैच पहले ही शुरू किया है। I also had to struggle to understand things. क्या कहना चाहता है? But now I am becoming comfortable because 2-3 बार रिपीट हो चुका मेरा। So अगर समझ में नहीं आ रहा है, one thing you should know, I have to do it again. Do it again, and then things will be okay. If no questions, then we sign off today. ओके And सर, meet again in the next class. Yes? ठीक है सर, सैटरडे बनाते हैं। All right. Yes, sir. मनाते हैं, संडे भी मनाएंगे। चलो, bye bye. Have a great day, all of you, and also the Sunday. We meet again in the next week classes. Bye bye.
ओके सर, थैंक यू। सर। थैंक यू। चलो, हैव ए ग्रेट डे, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।